This is one of my biggest learnings in life. Not everyone has to agree with me. And I don't have to agree with everyone either. I know I'm at that point in life where I also want to become a mother. And I think once that happens, I think that will also become a very integral part of my life. What is one of the most harshest thing that you have heard about yourself? When I was going to perform at Precap this year, was that why did her mother not have an abortion? My God. And I woke up and I read that comment and, something in my heart, because it was about my mother. आप किसी को दुखी देखने में खुशी पाने लगे, तब आप एक खराब इंसान बन चुके हैं. It takes us tragedy to move things within us. I hope it doesn't. I hope that, the people can get to that stage way before something tragic occurs. I was always a very stubborn kid, and that stubbornness grew into anger by the time I stepped into teenage. The day I realized that I cannot let other people be in control of my emotions, उस दिन सब कुछ बदल गया. मैंने भी अपने पेरेंट्स को अब एक अलग लेंस से देखना शुरू किया है. वो भी यार बहुत यंग बच्चे थे जब उन्होंने हमें पैदा किया था. द फैक्ट कि उन्होंने इतना कुछ कर लिया इज गुड इनफ. आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो हमारी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होती है ना, ये अपने आप में बहुत हाई क्लास वैल्यूज और हाई क्लास एटीट्यूड्स और हाई क्लास कोर लेकर आती है हमारे लिए. Hi, and welcome to the Journey Within podcast with me, Shobha Rana. This is a podcast where we encourage conversations to understand the concept of our inner world, to take that journey within, and we do that through the inspiring stories of our guests who have navigated through, of course, a lot of highs and lows in their own lives and have interesting insights to share with us. Today with me, I have Priya Malik, who's a poet, a storyteller, and of course, an actor. She is playing the role of Gandhari in the Great Indian Musical, which is one of the biggest musical shows that India has ever produced. And it is being showcased at NMACC, that is Neeta Mukesh Ambani Cultural Center. So please welcome her. Hi, Priya. Hi, thank you for having me. So good to have you here, and your demeanor, your personality does give out a lot about you, the kind of person you are, the calm that you carry with yourself. But what is that one thing that it does not give out? Maybe the calm that I don't carry within myself sometimes. So, calmness is something that I've always pursued in life, and it is only in the last few years that I've been able to achieve a certain level of it. At the same time, there's always a lot of nervous energy in me as well, which is not always apparent on the surface. So there you go. I've seen you perform multiple times across multiple venues, but the nervous energy that you're talking about, I've never seen an ounce of it on your face or in your demeanor or in your nuances. How do you mask it so well, if at all it's there? I think that's where the actor in me comes into play. Also, I feel it is such an important part of being a performance artist to have a little bit of nervousness in you. I would never want to be bigger than the stage. कलाकार कभी कला से बड़ा नहीं होता और ना ही होना चाहिए. सो आई ऑलवेज कीप दैट इन माइंड. और थोड़ी बहुत नर्वसनेस अच्छी है. ओवर कॉन्फिडेंस से ज़्यादा अच्छा है कि आप थोड़े नर्वस रहें, बिकॉज इट मेक्स यू वांट टू डू बेटर. इट मेक्स यू वांट टू फाइट द नर्व्स. इट मेक्स यू वांट टू परफॉर्म बेटर, चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो स्टोरी टेलिंग हो, चाहे वो स्टेज पर खड़े होकर डायलॉग बोलना हो, या शूट पर कैमरा के सामने डायलॉग बोलना हो. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो होना चाहिए. या आई थिंक इट काइंड ऑफ कीप्स यू ऑन योर टोज, और फिर आप नए तरीके भी ढूंढते हो शायद सेम चीज को और बेहतर करने के. बिल्कुल, एब्सोल्युटली. या Priya, you've also spoken about anger, in your earlier years, and there was a particular way you used to dress up, and again, demeanor. So there was this another demeanor to Priya. So as much as you've worked on your outer demeanor, talk me through your inner world. How has that shaped up in the recent few years, and what are the things that you have worked on? It's such an interesting question. So I believe that your internal self always reflects on your outer self. In fact, I would correct myself. I believe that your inner self usually reflects on your outer self. And it has changed inside me internally, which is why it has started reflecting itself externally as well. Like when you if you had asked me a few years ago, what's my favorite color? I would have told you black.
If you ask me now what's my favorite color, it's the color I'm wearing. It's white. So I think Two completely two contrasting. completely opposite colors and two colors which give out completely different energies as well, right? So I think कहीं ना कहीं वो inner work जब शुरू हुआ, वही अपने आप को बाहर भी दिखाने लगा. चाहे वो मेरा कपड़े पहनने का तरीका हो, चाहे वो मेरा मेकअप करने का तरीका हो, चाहे वो मेरा चलने का तरीका हो, बैठने का तरीका हो. So I think वो सब अपने आप ही हुआ, and it's been a very natural, organic process. The only thing that changed is that I allowed it to happen. I let go of the control. And I was like, I will let this happen to me and see what life unfolds. I think that is the most difficult thing to do, to allow it to happen, Yeah. because the rebellion in you and the person who wants to be in the driver's seat All the वो time. इतना take over कर लेता है कि Yeah. आप होने नहीं देते हो life को जैसे वो जी, हो रही है. जी. So which was that moment for you when you decided that, you know, listen, it's not working out for me, Yeah. and I need to allow life to happen to me? So there is this quote that I live by. And some people say it's a hadith in Islam. Some people say it's from a poem. I still don't know what the reference of this is. And it's my WhatsApp profile picture as well. I don't know if you have seen it. So it says, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है. होगा वही जो मेरी चाहत है. लेकिन अगर तूने अपने आप को सुपुर्द कर दिया उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी बख्शूंगा जो तेरी चाहत है. Wow. लेकिन अगर तूने नाफरमानी की उससे जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है. दिस हैज बीन माई प्रिंसिपल थ्रू आउट. और जब से ये बात मैंने समझी, सुनी और एक्सेप्ट करी, एवरीथिंग चेंज्ड फॉर मी. और ये चीज़ हर रिलीजन में किसी ना किसी तरीके से कही गई है. चाहे आप हिंदुइज्म ले लें, आप सिखिज्म ले लें, क्रिश्चियनिटी ले लें, इस्लाम ले लें, बुद्धिज्म ले लें, स्पेशली बुद्धिज्म ले लें, राइट? कि कहीं ना कहीं गॉड वांट्स यू टू अलाउ थिंग्स टू हैपन, एंड व्हेन यू अलाउ हिम और हर टू टेक ओवर योर लाइफ, यू विल सी चेंजेस. बट जहाँ आपने नाफरमानी करनी शुरू करी, जहाँ आपने रेजिस्ट करना शुरू किया, वो चीज़ें जो ज़िंदगी ने आपके लिए सेट आउट करी हैं, वहाँ आप उन चीज़ों को हासिल करने में थक जाएंगे, जो चीज़ें आप हासिल करना चाहते हैं. So that means you believe in the concept of destiny? I have started, yes, because of the path that my life has taken. I have always been that person who always knew what I wanted and also thought I knew what I wanted. And then life has come to me with such curveballs and surprises कि मुझे realize हुआ कि ये मेरे हाथ में नहीं है. और जितनी जल्दी मैं अपने आप को let go करूँ इस process के, you know, it's the most cliche thing in the world to say trust the process, but it is the most important thing in the world as well. So I tell everyone to just trust the process. Priya, how does one work on their anger? Because it's such a natural reaction and so instinctive कि, you know, जब चीज़ें आपके तरह से नहीं हो रही होती हैं या आपको जैसा चाहिए नहीं हो रही होती है, and it's not always coming from just you also, it could be your surrounding. तो उस टाइम पे कैसे you work through your anger? You have had your own issues with it. Yeah. So walk me through that journey so that we can sort of learn from it. So anger has always been a very integral part of me growing up. I mean, I was always not an angry kid. I was always a very stubborn kid, right? मतलब अगर मुझे अपनी पसंद की चीज़ नहीं मिली तो मैं सड़क पे लेट जाती थी. I was that child. Okay. Now my mama tells me कि तुम देखना तुम्हारे बच्चे होंगे वो भी ऐसे ही करेंगे तुम्हारे साथ. Karma. Absolutely, and I do believe in karma very strongly as well. It's written here on my wrist as well, karma. Anyway, so I was always a very stubborn kid, and that stubbornness grew into anger by the time I stepped into teenage. And at that time it was anger against the society because I was a slightly different kid. And वो anger अपने आप को multiply करता रहा. But I think जिस दिन मैंने ये जाना कि ये जो गुस्सा है, ये मैं सोचती हूँ कि और लोगों की वजह से, समाज की वजह से है, जिंदगी की वजह से है, या लोग मुझे नहीं समझते इस वजह से है. जिस दिन मैंने ये जाना कि ये सिर्फ मेरी वजह से है, उस दिन सब कुछ बदल गया. The day I realized that I cannot let other people be in control of my emotions, उस दिन सब कुछ बदल गया. So I think anger का यही है that जहाँ आप समझ जाएं कि इसका blame game आप किसी और के साथ नहीं खेल सकते, सिर्फ अपने साथ खेल सकते हो, उस दिन you start keeping it under control and making something positive out of anger. You know, my anger led to creativity slightly later in life, but it did.
So I'm glad that happened. तो वो एक release मिल गया उसको. But I think कहीं ना कहीं वो हर किसी के लिए possible है. अगर पोइट्री और स्टोरी टेलिंग में नहीं तो किसी और काम में या किसी और चीज में. But there's always a better way to manage anger rather than just being angry all the time. So basically, to go to the root cause of it, instead of just living by the blame games and the other things that we do and we let it manifest into, उसकी जगह अगर हम root cause पे जाके काम करें और actual में देखें तो शायद it's so true that anger किसी को खुद को कभी सर्व करता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकता है. राइट वो हमेशा आपको थोड़ा कम कर देता है ना. It will give you more diseases, you know. Anger अगर आप एक गुस्सैल इंसान बन के अपनी पूरी जिंदगी गुजार देंगे, it will lead to high blood pressure, you will get hypertension, you will get cardiovascular diseases. आपके आसपास लोग people will be walking on eggshells, लोग आपसे कुछ कहने से डरेंगे. क्या फायदा वो इंसान होने का जहाँ आपको खुद का परिवार, आपके खुद के दोस्त आपको कुछ सच्चाई बोलने से डरते हो, राइट? मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे खौफ में रहे, मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे डर के रहे. मैं चाहती हूँ कि जिसको जो बोलना है वो आके इतना हमारे बीच में कॉम्रेडरी हो कि वो आके मुझे बोल सके या बता सके. और वही असली जिंदगी है, राइट? दैट पीपल शुड लुक अप टू यू, पीपल शुड वांट टू बी विद यू, वांट टू बी अराउंड यू, वांट टू बी योर फ्रेंड्स, वांट टू बी योर स्टूडेंट्स, वांट टू बी योर audience, you know. So it's always a journey. I would never want someone to walk around eggshells when they're around me. You know, and if we go to the base emotion of this anger, Priya, like आपने कहा ये बहुत सारे तरीकों से आपको नुकसान तो पहुंचा ही रहा है, लेकिन उसके बेस इमोशन पे जाएं तो कहीं ना कहीं आप जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सटीरियर प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, that you know I am this, I am stubborn, I am a rebel and I want it my way, otherwise this will happen, that will happen. But the base emotion is fear. The base emotion I also feel is grief. I think anger comes from grief. To me, there is no other. कोई गुस्से की जड़ है दुख. आप इतने दुखी होते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आप उसको कैसे प्रोसेस करें. तो आप एक अपना एक्सटीरियर, जैसा कि आपने कहा, बना लेते हैं, एक गुस्सैल एक्सटीरियर, यू नो, ताकि हर कोई मतलब मुझसे 2 कदम अलग रहे या डरे या मैं जो कहूँ वही हो. So it all comes from grief. So the moment you start managing your grief, you will start becoming a less angry person and getting to the root cause. वो तो जिंदगी में हर चीज में है. हर चीज को आप सतह पर देखेंगे तो वो कुछ और होगी, जड़ पे जाके देखेंगे तो कुछ और होगी. और जहां हम जड़ों में जाने लगते हैं वहीं हम अपने आप को ग्राउंडेड और एक यू नो वैसा पेड़ बना के रखते हैं जो हमेशा झुका हुआ रहे. फाउंडेशन पे काम होना शुरू हो जाता है. So I think that's a beautiful takeaway to you know take from your journey. To go to the root cause and start making the foundation stronger from there. Absolutely. And that's what therapy is all about. You know, if you have ever experienced therapy or will ever experience therapy, it's all about getting to the root cause. Even a therapist will always tell you that you have to do this for you. The therapist can only do so much. Manage things by myself. Therapy is also a way to transformation, right? वो ट्रांसफॉर्मेशन आप किसी की हेल्प के साथ करो, आप बहुत सारी किताबें पढ़ के करो, लिख के करो, जो कि आपका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम ऑफ योर एक्सप्रेशन एंड फाइंडिंग योरसेल्फ है. या फिर वो आप थोड़े यू नो रिलीजियस पाथ से करो, जहाँ से भी आपके अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन और वो पीस और काम आ रहा है ना. आई थिंक रास्ते की जगह वी शुड रादर फोकस on the destination. I completely agree. God also helps those who help themselves. Therapists can also help those who help themselves. Absolutely. You know, तो आई थिंक जहाँ ये बात समझ में आई वहाँ मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहती हूँ तो वो मैं कर सकती हूँ. True. It was just about setting that intention कि हाँ मैं करना चाहती हूँ. And following through it. Oh my God. And it's tough. It's tough. Difficult. It's tough. It is That's why difficult. I think the role of an external push comes in, because to keep you on that track. Absolutely. Because which one of us doesn't know that we have to include some bit of reading in our day-to-day life. We have to include healthy eating and this and that. But a lot of us are not able to follow it. So that external push could help you that, but eventual journey is yours to take on. And I also follow a lot of mental health accounts. For instance, on Instagram, I read a lot of books about mental health. So for me, mental health has always been very important. And I give a lot of credits to therapists and also people who choose therapy. Because लोगों को वो करने से पहले कितना हमारे देश में there is so much stigma around mental health, right? So I'm so glad you and I, we are living in that age and around people who are now so open about it and they're trying to be a better version of themselves, and what can be better than that? Thankfully, the world is becoming better in certain ways for sure. Talking about mental health is one of those issues. Talking about women health as such. Talking about, let's say, divorce. A lot of things which were a stigma and a taboo before
are now opening up. Yeah. And people have this sort of acceptance for them, which is just an inspiring change to see. Hmm. We have a long way to go, miles to go rather, Hmm. but एक वो जो change आ रहा है वो आ तो रहा है। positive है और वो आ रहा है. Absolutely. And I think वो बहुत सारी strong लोग, I will not just say women, but strong लोग मिलके उस change को cause कर रहे हैं. And you are one of the strongest voices in that space, you know, not just through your creative expression, your art form, but the kind of life that you have lived, the kind of choices that you make day in, day out, that also influence that change in some manner, whether you know it in the moment or not. Yeah, true. Right? Absolutely. So Priya, very interestingly, you know, you've had such a beautiful career of being a poet and a storyteller. You've performed at some of the biggest and the best venues. Your writing has influenced people. The comments on your creations, beautiful, right? You're moving people through your words, through your art form. Now, you're saying that the Priya that is now today wasn't the same Priya that was there a few years ago. Yeah. Now, in that moment, you would have also created some sort of, you know, your art, poetry, creation that you would have absolutely related to then. But what is that one piece that you don't relate to now at all? Like, ये कब लिख लिया मैंने, क्या लिख लिया, मैं तो believe ही नहीं करती हूँ इस पे, लेकिन अब उसने काफी लोगों को move कर दिया और change कर दिया. So what is that one piece that you? I don't think there is any piece that I completely don't relate to, because I can relate to the moment in which I wrote it, right? उस moment में जो प्रिया थी, उस प्रिया से तो मैं अभी भी relate कर सकती हूँ, चाहे उस content से 100% relate करूँ या ना करूँ. तो मेरी कुछ शुरुआती कविताएं हैं वो काफी गुस्से वाली कविताएं हैं, right? I have now learned that there is a stronger way to express myself without having to yell, without having to get angry. Whether it is love and relationships, whether it is feminist issues, I can say them all in a firm manner and still make my point, rather than having to go ballistic and angry and fight with the world about it. तो कोई ऐसा पीस तो मैं नहीं बोलूँगी जो completely अब unrelatable हो गया है. पीसेस सारे मैं relate कर सकती हूँ. हाँ, वो प्रिया जिसने उस moment में आके वो लिखा था, उस प्रिया को वो प्रिया चेंज हुई है. But कोई ऐसा belief system है that has got completely changed, like things that you believed in earlier. Like for me, I had a very strong definition of righteousness, and I held it with pride. कि honesty, righteousness, इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए और झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए. But that has sort of changed, because what that led to was me becoming very unforgiving of the people who were, you know, कोई बहुत बड़ा, not just going through things, but जिन्होंने एक बहुत ही ऐसा white lie बोल दिया. I had no space to accept it. I was like, no, you are a liar. So get out. You know, it just doesn't work. But now with years, I don't know whether to call it maturity or whether to call it just a perspective, but that to sort of get it into my acceptance zone. You know, so that was, and out of that thing, I have spoiled a lot of things. Yeah. It wasn't coming from a bad intent, but it was a belief system. Now to change that belief system, I had taken a lot of debates. It has taken me literally having fights with people and then coming to an acceptance that no, there could be another world view. है ना? तो ऐसा कोई आपका belief system जो बहुत ही बदल गया हो? I no longer try to convince people of my viewpoints. जो मेरा perspective है वो मेरा perspective है, and I don't think I am meant to change the way people think. If it happens naturally and organically, great. But I will no longer debate you to death about it. ये एक बहुत बड़ा चेंज आया मेरे में, क्योंकि मैं जब से छोटी थी मैं डिबेट्स में बहुत पार्ट लेती थी, राइट? और हमेशा से वो लड़की भी थी जो बहुत डिबेट में इंडल्ज हो जाती है. जैसे घर में किसी ने कुछ कह दिया, अच्छा आप ऐसे कैसे कह सकते हो, ये तो नहीं होता, वो तो नहीं होता. I still make my point, but I don't go to death to prove it कि मैं ही सही हूँ. I leave it after a while, क्योंकि मुझे ये रियलाइज हुआ है कि अगर मैं किसी दीवार पर बार बार अपना सर ठोक रही हूँ तो अंत में उस दीवार का शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे सर पर चोट आ सकती है. तो मैं पॉइंट अपना अभी भी रखती हूँ, मैं डिसएग्री अभी भी करती हूँ, मैं अपना POV अभी भी देती हूँ लोगों को, लेकिन वो उस हद तक नहीं जाती कि जब तक ये इंसान मेरी बात नहीं मानेगा या मेरी बात से अग्री नहीं करेगा या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं मानेगा, तब तक मैं छोड़ूंगी नहीं इस इंसान को. मैं अब ऐसी नहीं हूँ. You are not attached to the outcome of your point of view. Absolutely. कि इससे ये बदल जाना चाहिए. Yes. या ये हो जाना चाहिए. I'm still the same Priya who would put out her perspective, but I will put out my perspective differently. And if you choose to accept it, fine. If you don't choose to accept it, it's also okay with me. It doesn't rattle me anymore. It doesn't disturb me anymore. I'm okay with you having your own viewpoints. And to me, that is education.
to me, this is one of my biggest learnings in life, is that not everyone has to agree with me. And I don't have to agree with everyone either. That's the other side of the coin. That is where your, I think, superpower lies. Yeah. When you have this realization, such a light bulb moment. Yeah. Because a lot of our energy is spent on this only, right? Yeah. That this is how it should be. Yeah. Only to realize later that the white and black that we keep fighting It's a for grey and world. with, Yeah. the world is completely grey. Absolutely. And there are so many things in life जो force से काम नहीं करती, जो pressure से काम नहीं कर सकती. You can't force people to love you. You can't force people to agree with you. You can't force people to feel a certain way about something when they don't. So the moment, again, letting go, हमने शुरुआत वहाँ से की थी आज, right? तो जहाँ वो आ जाता है ना कि ठीक है, this is the time when I let go and I let this person choose their own journey or choose their own thought or choose their own process. वहाँ पे I think you achieve something, you learn something. वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख रही है. In fact, one of my poems called जैसे तुम प्यार करते हो is about that only. The idea that जरूरी नहीं कि जैसे तुम प्यार करते हो तुम्हारा प्रेमी ठीक वैसे ही प्यार करे. So that poem is about love languages, but eventually I feel the same way about life as well now. जो आज से कुछ साल पहले वाली प्रिया बिल्कुल नहीं मानती, बिल्कुल नहीं मानती. Priya, when you become kind of detached with the outcome of your point of view, फिर आप feedback और criticism को कैसे include करते हो अपने system में? Because that is somewhere I feel I find it a little troublesome. क्योंकि जब कोई आपको कोई कुछ बताता है, that could also be a feedback. That could also be criticism. Yeah. तो कैसे समझें कि क्या criticism है? मतलब क्या मुझे नहीं लेना है, reject करना है, और क्या मुझे as a feedback लेके improve करना है? Wow. I don't let negativity affect me anymore. And this has also been a very inner journey for me. I am talking about the Priya जो आज से 5 साल पहले, जब मैं इंडिया आई थी 5-6 साल पहले, मैं रोज लड़ाई करती थी ट्विटर पे किसी ना किसी से. मैंने एक ट्वीट डाली, किसी और ने कुछ लिखा, फिर उसको एक विटी सा कमबैक दिया जीतने के लिए उस मोमेंट में. फिर किसी और ने कुछ किया, फिर मैंने उसको एक विची सी ऐसी बात बोली कि बोलती बंद करवा दी वाली बात, राइट? और उसमें मेरा पूरा दिन गुजर जाता था, राइट? मैं रोज सुबह उठती थी, मैं देखती थी अब क्या लिखा है किसने, राइट? एंड आई ऑलवेज वांटेड टू विन दोज बैटल्स. एंड आई थिंक व्हाट आई हैव लर्नड नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म इज दैट आई चूज माय ओन बैटल्स एंड नॉट एवरी बैटल इज माय बैटल. सो व्हेन somebody is being critical of my work or giving feedback on my work, चाहे वो positive है, चाहे वो negative है, I look at it, I learn from it, and I choose what to accept and what not to accept. But one thing that I don't do is I don't let it affect me. ना मैं positivity को अपने सर पे चढ़ने देती हूँ कि अरे मैं तो best poet हूँ अब, मैंने तो कर लिया achieve, अब कुछ रहा ही नहीं है, ना मैं negativity को अपने ऊपर चढ़ने देती हूँ. I take both with a pinch of salt. Neutral gear में रहना बहुत important है, I think. Especially अपने art form को लेना. ऐसा नहीं है कि मैं negative comments नहीं पढ़ती या नहीं देखती. मैं पढ़ती हूँ, मैं सोचती भी हूँ उसके बारे में, कभी कभी affect भी होती हूँ, right? But I don't let it disturb me. In the same way, positive comments को भी, अगर किसी ने लिखा प्रिया आप तो सबसे बड़े सबसे अच्छे पोएट हो, आपने सबसे अच्छा काम लिख दिया अपनी लाइफ का, मैं उसको भी अपने ऊपर नहीं चढ़ने देती, बिकॉज वो भी सच नहीं है. So it's nice to listen to everyone, but it's also nice to listen to your own selves at the end of the day. What is one of the most harshest thing that you have heard about yourself? I think one comment that had really affected me, this was when I was going to perform at Rekha this year, was that why did her mother not have an abortion? My God. And I woke up and I read that comment and something in my heart, because it was about my mother. Right? And it really made me think what this person must be feeling to write something like that. It's a very strong statement to write about someone. And I felt really terrible about it. But at the same time, I also felt more terrible for the person who wrote it. Because जब वो किसी की अगर उसे कविताएं नहीं पसंद और वो इस हद पे जा सकता है, तो वो इंसान कैसा होगा? I feel terrible for the person who wrote it. जब आप किसी को दुखी देखने में खुशी पाने लगे, तब आप एक खराब इंसान बन चुके हैं. जब आप
ऑनलाइन जाकर किसी को एक ऐसा कमेंट लिखते हैं जो आप जानते हैं कि उसको चुभेगा और आपको उस चीज से तृप्ति मिलती है या खुशी मिलती है या वो मोमेंटरी हैप्पीनेस मिलती है, तो आपको खुद को बदलना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में और बहुत चीजें करने. So, I want people to really understand it. I spend a lot of time online, and there are so many things that sometimes I don't like or I dislike. I'm also a human being, and art is subjective. किसी का कभी गाना नहीं पसंद आया, कभी किसी की कविता नहीं पसंद आई, किसी की कहानी नहीं अच्छी लगती, किसी की एक्टिंग नहीं पसंद. राइट, मेरे साथ भी होता है. लेकिन मैं जाकर ऐसी बातें लिखकर उनको दुख पहुंचाकर क्या करूं? और क्या हो जाएगा? क्या वो अपना काम बदल देंगे या लिखना बंद कर देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा. I will not focus on that one comment. I will focus on the 99 other beautiful comments that I'm getting in my life and concentrate on the goodness in my heart and in the heart of my audiences as well. For people like us, Priya, जो millennials हैं, है ना, उनके लिए to not be so affected, मैं कहूँगी रिलेटिवली थोड़ा सा आसान है, क्योंकि हम थोड़े उस एज पे आ गए जहाँ एक मैच्योरिटी स्टेम हो जाती है. बट आई जस्ट वंडर अबाउट जेन जी, है ना, जिनके लिए जो अभी 20, 21, 22 साल के, 19 साल के हैं, and they are subjected to this harsh point of view, and they haven't seen the world enough, and they haven't even gone through enough experiences to be to dissociate sort of wise and have this perspective of disassociating from it. One way of disassociating could be you becoming absolutely numb, which is not the best way. Which is not the best way to be. Yeah, absolutely. In that moment, it might just serve you, and you might just go through life for the next 5, 10 years, and you could gain a lot of success and all of that, because you're numbing yourself to everything, right? So you could be very focused into what you want out of life and all of that. But again, you're not letting life happen also. So मुझे इस generation के लिए थोड़ा सा मतलब लगता है कि वो wisdom जब तक आना, तो तब तक वो late हो जाना और वो सब ना. I agree, and it's a very fragile generation that's coming up, because this is the generation that has been born into social media. हम लोगों की जिंदगी में तो social media बहुत late आया, right? Orkut, Facebook, ये सब late आया था. By that time we were still teenagers, but we were still like, had developed to a certain point. पर इतना ज़्यादा quantity में नहीं आया था. 2G का ज़माना था, limited internet and all of that. Now तो it's in and it plays with their self-esteem, it plays with their mental health, and when you're going through such things in life, it leads to only two outcomes. Either you can allow it to break you, or you can allow it to make you. So I hope that this generation finds ways to cope and make themselves out of it, rather than letting these external factors break. And I hope one of those ways for it to work for you is not by becoming numb towards or angry, for that matter, right? I used to have this policy called delete or defeat. So interesting. Online, and now I don't think about the defeat at all, because I'm not interested in winning battles with these people. I would rather delete, mute, block, and move on. That's such a great way to, and such a great language to put it into. Very interesting. Now, coming from here to 3 emotions that you love to write about. Take me through those. Sure. So I love to write about love. I think that is the number one thing in my life. It has always been. I should have added except love, because so much of your work is around love that everybody knows that. So I think love is definitely one of the most integral parts of जो मैं हूँ, जो मैं लिखती हूँ, और जिस बारे में मैं सोचती हूँ और बहुत ही strongly feel करती हूँ. दूसरा, I love to write about gender issues. Any kind of discrimination for that matter, right? So feminist issues पे ज़्यादातर मेरी कविताएं उसमें भी होती हैं, because I do feel very strongly about it. And third is very difficult for me to choose. I think third is whatever the brands come up with, और हमारे शो की ये थीम है, इस पे लिख दो, उसमें भी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ढूंढने की कोशिश करती हूँ. I don't just write commissioned work कि हाँ अच्छा आपको ये लिखवाना, ये लिया. वहां पे भी मैं कहीं ना कहीं प्रिया का सोल ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि हाउ डू आई रिलेट टू दिस, मेरी लाइफ स्टोरी यहाँ पर कहाँ है, मैं कैसे इस चीज को अच्छे से लिख सकती हूँ अपना बनाकर, rather than just writing for a brand. But I know I'm at that point in life where I also want to become a mother, and I think once that happens, I think that will also become a very integral part of my life. So maybe in the next couple of years you will see some of that work coming out, and you may already have. I've written a few poems already about parenthood and mothers and fierce mothers, because I think I'll be a very fierce and protective mom. I'm a very fierce and protective person in general, of my life, my house, like when I say house, I mean my space, my energy, my love, my family,
my child, my pet, no one can ever put a finger on any of those things. Mm-hmm. They will have to face me first. Yeah. Yeah. So Priya, so happy to know that you're, thinking of motherhood, becoming a mother. Yeah. You recently got married. Yeah. Congratulations again for Thank that. you. And I just can't wait for it to happen for you because the smile that I can see on your face, Yeah. I know that it is now in your system. Yeah. It's coming from deep within. Yeah. I've always been very maternal by nature, even when I was a little girl. What are the 3 most maternally annoying ways that you exude or exhibit in your friendships and people around you that they are annoyed of? I'm always the mom of the group. Oh God. Right? High five on that. सबने खाना खाया या नहीं खाया is one of my biggest dilemmas. मेरे घर कोई भी आता है, चाहे वो घर पर काम करने आया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, चाहे वो कारपेंटर हो, sometimes even the delivery boys, Amazon, Zepto, any of it. I have to make sure that people have eaten. It's a very important part of who I am. So one is that. I have this very nagging habit कि अगर जब वो होता है ना घर पहुंच के बता देना. I do that with my friends as well. Karan के साथ तो मैं करती हूँ. And Karan also took some time to wrap his head around it कि क्यों बताना है कि मैं पहुंच के आऊँ. I was like नहीं बताना है. I need to know कि तुम पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे. Wow. So I do that with my friends a lot as well. And I think the third mom-like thing is that I generally talk like moms. And do you? I do. Growing up, I used to tell my mom, मैं कभी आपकी तरह नहीं करूँगी और मैं सब कुछ उनकी तरह ही करती हूँ. बातें, questions, asking the hard questions, शादी कब कर रहे हो, बच्चे कब करोगे. I am that person internally. Yeah. Just yesterday I had written a caption on my Facebook that, in our mid-30s, in my mid-30s, I've become so much like my parents mother, yes. that I wonder sometimes what was all that rebellion for? Absolutely. Yeah, it's just almost funny that you become life this takes person. a full circle, and everything that I used to get annoyed by when it comes to my parents, I have become all of those things now. And now I see things from their perspective. अब मैं समझती हूँ कि वो क्यों कहते थे जो कहते थे. Right? So you're right. Life does take a full circle. Correct. जब बचपन में पेरेंट्स बोलते थे कुछ चीजें बाप बनने के बाद ही समझ आती है या माँ बनने के बाद समझ आती है. मुझे लगता है कहीं हम लाइफ की भाग दौड़ में, बिकॉज पहले बाप और माँ बनने से जो चीजें समझ आती थी, दैट वाज आल्सो पीपल वर बिकमिंग पेरेंट्स अ लिटिल अर्ली इन देयर लाइफ. सो हमें शायद हम पेरेंट्स बने नहीं उस एज में, बट वो विजडम थ्रू डिफरेंट एक्सपीरियंसेस आने लग गई है. तो वो मटर्नल इंस्टिंक्ट्स जो है वो थोड़े और स्ट्रांग हो गए. विद मी ऑल्सो ये है, खाना खाया कि नहीं खाया, नहीं खाया तो खुद से जा के खिलाना, पूछते रहना पहुंचे कि नहीं पहुंचे, कम्युनिकेशन में रहो मेरे साथ, एंड ऑल ऑफ दोस. जहाँ जा रहे हो बता के जाओ. टॉर्चर इट विल बी फॉर आवर किड्स. मेरी मम्मा मुझे बोलती थी जहाँ जा रही हो बता के जाओ. क्यों? अब मैं सबको बोलती हूँ, स्पेशली Karan being a part of my family, I'm like, जहाँ जा रहे हो मुझे बता के जाओ. जहाँ भी जा रहे हो मुझे पता होना चाहिए तुम कहाँ हो. So I think our kids have a lot of this stored maternal energy coming their way. Absolutely. I don't know how that world is going to be, but I only have good positive hopes from it. Yeah, absolutely. Yeah. Same here. Abhi time hai. I think I'll take another 1 or 2 years, but let's see. I'm just so happy hearing this from you that I've lost the flow of my thoughts now. I'm just into that conversation, that this is the conversation that I want to have now. Because see, a woman goes through a lot, especially now that you're in your 30s, that do I want to become a mother or do I not want to become a mother? When I was in my 20s, I was extremely clear that by the time I turned 30, I would have 2 kids. Naam soch ke rakhna and all of that. I was that girl. Today I'm 34 and of course not married, no kids and nothing in life going on that way. There are a lot of times when I question, do I really want a kid? And sometimes I go towards the side that, what's the need? I don't want to and all of that. But sometimes I'm like, no, this is a good possibility and this could come out and all of that. The maternal side takes over. Yeah. So we go through this sort of calculation in our head. How has that been for you? So in my 20s, I also went through a phase of not wanting to have children. And I still think it is absolutely okay to not have children. But in the last few years, I have very strongly wanted children. मेरे हिसाब से parenting मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि my biological clock is running out, or I don't want to become a parent because my mother wants a grandkid. मेरे लिए I think parenting comes from that source where I feel that it will bring out the best version of who I am. ऐसा होता है, right? When you are with your dog or with your cat or with another person's baby,
you're always the nicest person around them. You want to give them everything. I also feel that it will bring out a part of my life wherein I'm loving someone without expecting anything in return. I think that's what parenthood is all about. If you are having children for any other reason than that, I think it is time to reflect, right? And I also feel that I can now give a child a good life. Could I have done that when I was 25? The answer was no. So I would not want to bring anything into this world, whether I have a child naturally or I adopt, and not give it the life it deserves. And now I'm at a point in life where I can do that for somebody. So I'm looking forward to that. Yeah, this understanding of difference of it is not from me, it is through me. Yeah. It's just so empowering and beautiful. Absolutely. From me के वजह से बहुत सारी expectations, selfish desires. I sort of get the perspective where our parents of us, yes. their generation is coming from, because they had not read these books. Absolutely. They had not seen this worldview. Yeah. They had not enough exposure to put it in these many words. So they would just say what they knew or what they had heard of. कि कर लो बुढ़ापे का सहारा बनेगा. वही कोई बुराई नहीं है. मैंने भी अपने पेरेंट्स को अब एक अलग लेंस से देखना शुरू किया है. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हम सब एक ऐसी उम्र से गुजरते हैं जिसमें हम अपने पेरेंट्स को भी बहुत चीजों के लिए ब्लेम करने लगते हैं. आपकी वजह से हुआ, आपने ऐसा किया, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं. आई थिंक इस एज में आकर एक वो एक्सेप्टेंस और एक फॉरगिवनेस आने लगती है अपने पेरेंट्स को लेकर कि वो भी यार बहुत यंग बच्चे थे जब उन्होंने हमें पैदा किया था. द फैक्ट कि उन्होंने इतना कुछ कर लिया इज गुड इनफ. हम उसमें मीन में एक ना ही निकाले तो अच्छा है. अभी कुछ साल पहले माई मॉम गॉट वेरी सिक. शी वाज इन द ICU एंड आई रिमेंबर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल. और मेरी सिस्टर बाहर रहती है तो इंडिया में सिर्फ मैं ही थी और सब कुछ अकेले मैनेज करना पड़ रहा था हॉस्पिटल के चक्कर. और वो बहुत it's a lot emotionally and everything else. And I remember this uncle came to visit my mother and मैं उन्हें बता रही थी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. उन्होंने कहा बेटा बहुत खुश नसीब हो. मैंने कहा अंकल क्यों? तो अंकल कहते तुम्हें भगवान ने मौका दिया है अपने माँ बाप की सेवा करने का. अंकल कह रहे मेरे को तो ये मौका मिला ही नहीं था. My mother passed away the first time she got hospitalized and something in me changed, शोभा. मुझे रियलाइज हुआ कि जिस चीज के लिए मैं इतनी कंप्लेन कर रही हूँ, कंप्लेन इन द सेंस आई एम रेजिस्टिंग इट कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है. He looked at it from such a positive point of view. And he said, you are blessed that you're getting the chance to serve your parents back. And after that, anything that happens in this nature, I feel this is a part of what's written for us. And this is a blessing in disguise. It doesn't feel that way when it is happening. It doesn't at all. But when you look at it from a different POV, I think there is a lot of, sabat in it as well. So true, because ऐसे instances जब आपकी लाइफ में होते हैं, जो भी आपकी लाइफ में हो रहा होता है, if you allow yourself to absorb it, there is so much learning there. Yeah. When my father was in the ICU about 3 years ago, it was just on the cusp of COVID. So 2020 COVID वाला time शुरू हो गया था. This is February end I'm talking about, March beginning actually. I remember that year 8th of March was Holi. My father was admitted a few days before. One of my brother was in Bangalore, one is in the US. So I was alone. And the same thing, ICU में admit हैं और आप hospital के चक्कर कर रहे हो, you have a mother, and वो सब भी आपको manage करना, अपनी emotional state को manage करना. But उस moment पे I don't know, this is 3 years back, so I was 31. So for 31 years of my life, I hadn't felt that connected to my father that I felt in those 5 days. I can imagine. Yeah. And once he was out, the halat that we took him in was raat ko, he started having this fit. And he had this froth coming out of his mouth. The whole shirt was wet. My mother didn't know. She was sleeping next to him, but he was just, getting jittery in the bed and all of that. I heard some weird noises. He couldn't speak. Like a seizure. It was a seizure. His tongue was out and all of that. His tongue couldn't roll and all of that. My mother couldn't hear it because she must be in her sleep and stuff. But I heard it in the other room. I ran up to him and I said, and his whole shirt is covered in the froth. And we live in a building where we don't have the elevator, right? So I had to wake up all my neighbors. We couldn't make him sit in a chair because his body had paralyzed at that point. I can understand. It was such a nightmare. It can. And he literally was in my shoulder. And कैसा हमें आदत होती है ना अपने पेरेंट्स को एक बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग will be my protector. But उनको उस हालत में देखना where he is just dependent on you and he cannot even say anything and you grow up in that moment. ये reverse parenting की एक stage होती है, and
I can understand because I've been there. ये एक रिवर्स पेरेंटिंग की स्टेज ही आई थिंक किसी किसी के लिए बहुत जल्दी शुरू हो जाती है जिंदगी में. मेरे लिए भी पिछले कुछ सालों में हुई. एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी हमें अपने पेरेंट्स को एज ह्यूमंस, एज फ्लॉड ह्यूमंस देखना, राइट. हमने जैसा कि आपने सही कहा, हम अपने पेरेंट्स को बहुत एग्जॉल्ट करके रखते हैं अपनी लाइफ में. दे आर लाइक गॉड लाइक फिगर्स फॉर अस, द प्रोटेक्टर, द स्ट्रॉन्ग वंस. I think the first time when you see your parent cry, or the first time you see your parent fail, or the first time you see your parent sick, I think वहाँ कहीं ना कहीं कुछ बदलता है हम सब में, और बहुत ज़रूरी है वो बदलाव होना भी. एंड आई थिंक ये 30 के बाद तो आप एक ऐसी एज में आ जाते हैं जिसमें आप कहीं ना कहीं खुद पेरेंट बन जाते हैं. मैं ऑलरेडी बन चुकी हूँ. इट्स बिन years now. I am the parent, they are the children now. And it happened too soon in my life in some ways, but I think I grew up in those moments. And now I look at them with a sense of empathy. Rather than as a sense of कि नहीं मम्मी आप मुझे ये दो, पापा आप मेरे लिए ये करो. अब वो चेंज हो गया. अब मैं कहती हूँ मैं आपके लिए करती हूँ, आप बैठो मैं लेके आती हूँ, मैं करती हूँ. तो अच्छा है. इसमें ये भी एक जिंदगी का लाइफ सर्कल कंप्लीट होता है. करेक्ट. आई थिंक इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ. करेक्ट. बट फिर मुझे ऐसा भी लगता है दैट आई होप दैट आई बिकम अ पर्सन दैट आई डोंट वेट फॉर सच अ ट्रैजिक इंस्टेंस टू हैपन to do my best for them. Yes. And it hurts me to say that, it sometimes takes us tragedy to move things within us. I hope it doesn't. I hope that, the people can get to that stage way before something tragic occurs. So, bilkul sahi baat hai. Yeah. Priya, speaking of tragedies, one is that one tragedy or a very jarring experience that you've gone through that froze you in the moment and you were like, yaar, ab nahi ho payega mujhse. I can't get past this. There have been a lot of moments wherein I thought I will not be able to overcome them. But I think the inner Priya is a very strong and a very resilient Priya, Shobha. And I don't let it come on the surface a lot, when it comes to my weaknesses and my vulnerabilities. But I've had a lot growing up, right? I don't think grief is a competition. I don't think struggle is a competition. I don't think trauma is a competition. So I would never want to be like, हाँ मेरा trauma तुम्हारे trauma से बड़ा है, या तुम्हारा grief मेरे grief से छोटा है. It should never be. But I think कहीं ना कहीं I've always been very resilient by nature. मुझे पता है कि मैं कुछ भी हो जाए मैं survive कर लूँगी. My survival instinct is very strong. And I think it comes from the way I was as a child. I was a very hyper-independent child also growing up. And growing up, some years in my life were not easy at all. We had a lot of financial issues growing up and a lot of other things that I've sometimes spoken, sometimes not spoken about because I'm waiting to come to the right moment in life, to speak about certain things as well. लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ जिसमें मुझे लगा कि मैं अब नहीं कर पाऊंगी. कहीं ना कहीं वो जो फेजेस आए डिप्रेशन वाले, सुसाइडल थॉट्स वाले, वहाँ भी कहीं मुझे हमेशा लगता रहा कि मैं कर लूंगी यार. आई थिंक जब आप एक सर्टेन बैकग्राउंड से होते हो ना प्रिया, जैसा आपने कहा कि बहुत फाइनेंशियली स्ट्रगलसम बैकग्राउंड भी रहा, तो शायद वो गिव अप ना करने की पावर आ जाती है कहीं ना कहीं. दैट इज अनदर ब्लेसिंग इन डिसगाइज. उस समय लगता है कि यार ये खत्म ही नहीं हो रहा है, बट दैट इज टीचिंग यू समथिंग. आई थिंक कहीं ना कहीं ये जो हमारी मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग होती है ना, ये अपने आप में बहुत हाई क्लास वैल्यूज और हाई क्लास एटीट्यूड्स और हाई क्लास कोर लेकर आती है हमारे लिए, और वो हमारे अंदर ऐसा रमा हुआ होता है कि वो कभी बदल नहीं सकता. Take me through 3 of the best learnings that happened when you grew up in a low middle class household. सबसे पहली बात, आप पैसे की कीमत सीखने लगते हैं. पैसे की एक एक रुपए की कीमत आपको पता होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पैसा मेहनत से कमा के आता है. अब पेड़ों पे नहीं उगता. You're not born with a golden spoon. तो आप मेहनती बन जाते हैं. I am a huge believer in hard work. I do consider myself a very hardworking girl, and I take a lot of pride in my work ethic. My sense of duty. अगर मुझे कोई काम दिया गया है, मुझे कोई काम सौंपा गया है, मैं वो काम पूरी तरह निभाती हूँ. And I think this comes from being in a low middle class family. Right? जब माँ बाप काम पर जाते हैं तो आपको बोल के जाते हैं कि छोटी बहन को खाना खिलाना. And you know it's your duty because you know there's no helper coming, there's no nanny coming, none of that is happening. You have to do it. So कहीं ना कहीं वो सेंस ऑफ ड्यूटी बहुत अच्छी चीज़ है. पैसे की वैल्यू बहुत अच्छा आप सीख जाते हैं. एंड आई थिंक तीसरी चीज़, आप कम में खुश होना सीखते हैं. और जहाँ कम, और ये कोविड के टाइम पे भी हुआ हम सबके साथ, राइट. हम सीख गए कि कम चीज़ों के बिना भी हम रह सकते हैं. जो चीज़ें हमें
असेंशियल लगती थी, बेयर नेसेसिटीज लगती थी कि भाई मेड ने तो आना ही आना है, बर्तन तो मेड ही करेगी, राइट? वो चीजें बदली, हमने खुद भी सीखा कि देयर इज सो मच इन लाइफ दैट we can be happy with this much. क्योंकि I've had a comparatively happy childhood. हमारे पास कुछ नहीं होकर भी बहुत कुछ था. But Priya, what should we do to not forget that lesson now that we are bouncing back to a normal world? तो बहुत सारी learnings जो उस वक्त हुई थी, चाहे वो realizing your family values, चाहे वो realizing the juice in your relationships, the meaning of your relationship, ये सब चीजें जो तब realize हुई थी, अब क्योंकि सब चीजें खुल गई और पहले वाली दुनिया आ गई है, तो थोड़ा थोड़ा फिसलते जा रही है हमारे हाथों से. You're right about that. तो कैसे इसको पकड़ के रखें? I think एक तो मुझे लगता है आपकी पोएट्री सुननी चाहिए, तो उससे वो इमोशंस बिल्कुल ताजे रहते हैं हमेशा अपने रिश्तों के बारे में. नहीं, आई थिंक कोविड ने जो चीजें हमें सिखाई थी, मेरे लिए सबसे बड़ी सीख रही थी टू नॉट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड, राइट? मैं किसी चीज को जिंदगी में कितना फॉर ग्रांटेड ली, जैसे कि सड़क पर चल के दुकान तक जाना, जिंदगी की छोटी छोटी चीजें, मास्क बिना पहने सांस लेना, राइट? उस टाइम पे जब उन चीजों की वैल्यू समझ में आई, माँ बाप को रोज कॉल करना, कॉल तो खैर आप कोविड के टाइम पे भी कर सकते थे, मिलना, टू मीट पीपल मोर ऑफन, तो आई रियलाइज ऑल दीज वैल्यूज, और मैं अभी भी उन चीजों को थोड़ा पकड़ के रखती हूँ. आई लाइक बीइंग हैप्पी इन स्मॉल थिंग्स, एंड a lot of people make fun of me for that, because कभी कभी मैं छोटी छोटी चीजों से बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ. जैसे मैं जब इंडिया वापस आई थी, तो मैंने बहुत सारी चीजें विदेश में रह के मिस की थी हमारे देश की, राइट? और एक छोटा सा एग्जांपल था शकरकंदी वाला. तो अब जब भी मैं कहीं मुझे तो बहुत पसंद है, आई एग्री, मुझे भी रोड साइड वाली बहुत करण ने पसंद कितनी है. बार देखा है कि हम लोग गाड़ी में होंगे, मैं कहूँगी शकरकंदी वाला. मैंने कहा क्या रोड हो गया, साइड वाली नॉर्मल है, तो क्या हो गया? मजेदार है. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम कि हाय, पता है वहां पे कभी कभी मेरा इतना मन करता था शकरकंदी खाने का, एंड इट यूज्ड टू बी सो हार्ड टू जस्ट गेट दैट इंडियन टेस्ट, चाट, ये सारी चीजें. तो मैं छोटी छोटी चीजों में बहुत खुशी ढूंढती हूँ, और मेरी वो जो कविता है, मैं 2019 में 1999 ढूंढ रही हूँ, वो इन छोटी छोटी चीजों के बारे में ही है. एंड दैट पोएम हैज डन वंडर्स फॉर मी, बिकॉज दैट्स द ट्रूथ, कि जिंदगी में अंदर से हम सब बहुत ही सिंपल लोग होते हैं. हम कभी कभी अपने आप को एक वेब में वो हो जाते हैं, और मेरे साथ भी हुआ है बहुत सालों तक, जिसमें हम सोचते हैं कि हमें यही चाहिए, बट इनसाइड वी आर डिफरेंट, and there is that dilemma between who we are on the outside and who we are on the inside. So I think both अंदर से we are all very simple and very basic people, और कोविड ने भी यही सिखाया था, और ये मैं हमेशा याद रखती हूँ. एग्जैक्टली प्रिया, आई सो स्ट्रांगली बिलीव इन इट, बिकॉज जब अंदर की बात करें, अंदर है क्या? अगर फिजिकल तौर पे बात करें तो ऑर्गन्स सब में सेम है, काम भी सेम तरह से ही करते हैं, एटलीस्ट सिमिलर तरह से करते हैं. इनर वर्ल्ड की बात करें तो क्या आप गिने चुने 10-15-20 इमोशंस की लाइब्रेरी है, वही फील करते हो. लव, एंगर, फियर, एंजाइटी, इनसिक्योरिटीज, पर्पस, हैप्पी, सैडनेस, जॉय, ब्लिस, ये सब चीजें आप फील कर सकते हो, राइट? और ये हर कोई फील कर सकता है. अब सोर्स इसका कुछ भी हो सकता है. आपके लिए लव का सोर्स कुड बी योर हस्बैंड, कुड बी योर कैट, कुड बी योर आर्ट फॉर्म. फॉर मी इट कुड बी शकरकंदी. एब्सोल्युटली. लेकिन और चाय लेकिन जो वो फीलिंग आ रही है उससे, वो सेम है, राइट? तो हम लोग अंदर से इतने सिमिलर हैं, है ना कहीं हमें लगता है कि यार हमें उससे बेटर करना है, इससे बेटर करना है, ये करना, बट वी हैव टू रियली टेक अ पॉज एंड रिफ्लेक्ट बैक एंड टेक दिस जर्नी विद इन टू अंडरस्टैंड दैट आवर इनर वर्ल्ड इज सिमिलर एंड सेम. So ये इतना फस किस चीज का है? And understanding the immense value that the smaller things hold in your life. I think चाहे वो आपके relationships हो, चाहे आपका career हो, उन छोटी छोटी चीजों में जब आप खुशी ढूंढने लगेंगे और होने लगेंगे उन चीजों से खुश, नेचर भी हमें यही सिखाती है. पेड़ हमें सिखाता है जड़ों से जुड़े रहना, कि जिस दिन आप जड़ों से जुड़े नहीं रहेंगे, यू विल uproot very easily, right? जानवर हमें सिखाते हैं छोटी छोटी चीजों में खुशी मानना, अनकंडीशनल लव देना. इवन पेड़ हमें यही सिखाते हैं, they just give us, they don't ask for anything back. और नेचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है जो वो सिखाता है दैट आपसे बड़ी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है. आई एम अ बीच पर्सन, आई लव द सी, लेकिन मैं समंदर को अगर कुछ देर के लिए देखती रहूं ना, तो इतना खौफ पैदा होता है, इतना खौफ पैदा होता है, आपको रियलाइज होता है कि आप ना एक वो सैंड का ग्रेन भी नहीं हो. है ना? ये सारे इतने इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन से आते हैं. आई एम अ माउंटेन गर्ल, राइट? आई लव द माउंटेन्स. And somebody once asked me, why do you like the mountains? I said, because they make me feel small. And it is so important in life to feel small sometimes, to feel insignificant sometimes. So I think there are lessons all around us, inside us and around us.
It's just a matter of taking a pause and observing them and finding out what they're trying to teach you. Priya, what would be your 3 best ways to understand our inner world better? Observation, introspection and reflection. आई थिंक जब आप अपने अंदर ऑब्जर्व करने लगते हैं कि आप किन चीज़ों से ट्रिगर होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इमोशनल स्टेट चेंज कर देती हैं, तब आप उन पे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, और जब रिफ्लेक्ट कर सकते हैं तो फिर आप उन चीज़ों पे बदलाव भी कर सकते हैं. या डू यू हैव एनी सजेशंस फॉर सम एक्सरसाइजेस, चाहे वो जर्नलिंग हो चाहे राइटिंग हो, जिससे हम थोड़ा इस स्किल को ना होन कर सकें, सिर्फ एक वर्ड ना बन के रह जाए ऑब्जर्वेशन, है ना? तो कैसे डे टू डे लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करें? आई थिंक हर किसी का अपना तरीका होता है. आई डोंट डू जर्नलिंग एट ऑल. अ लॉट ऑफ पीपल हु मीट मी थिंक दैट आई एम अ जर्नल काइंड ऑफ अ गर्ल, बट आई एम नॉट. आई डोंट हैव दैट अमाउंट ऑफ पेशेंस दैट इज रिक्वायर्ड टू जर्नल माय लाइफ. In fact, I don't write anything down. Everything is, I type everything here and there. So I think हर किसी का अपना अपना तरीका है. सबसे अच्छी बात है कि आपको अपना तरीका ढूंढना पड़ेगा, और किसी और का तरीका जरूरी नहीं है कि आपका तरीका बन सकता है. हर किसी का एक अपना अपना तरीका होता है. A ritual that you do every day, which you find happiness in. चाहे वो चाय बनाना हो, चाहे वो सुबह एक्सरसाइज करना हो, चाहे वो सुबह अपने बच्चे के साथ वो मोमेंट्स बिताना हो. जैसे मैं सुबह उठती हूँ अराउंड सुबह 5:30 बजे. माई कैट लाइक्स टू गेट फेड एट दैट टाइम. तो सुबह उठ के रोज 5:30 बजे, लाइक क्लॉक वर्क, आई फीड हर एंड देन आई ओपन द विंडोज फॉर हर सो दैट शी कैन स्टेप आउट इन द balcony and have her own path. मेरे लिए that moment is like almost meditative because I find so much happiness in it. Same thing is when I have my first cup of chai with Karan, right? And usually हमारे घर सुबह की चाय Karan बनाते हैं, right? तो मेरे लिए वो that moment of spending time with him and having that सुबह की चाय, शाम की चाय मैं बनाती हूँ, सुबह की चाय Karan बनाते हैं. So I think वो rituals जो है ना, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है लाइफ में. Understanding the power of rituals and making rituals. बिल्कुल, मेरे लिए even तैयार होना is a ritual. मेरे लिए बिंदी लगाना, अपना काजल अच्छी तरह से लगाना, अपना जूड़ा बांधना, वो मोमेंट्स में ना मैं स्लो डाउन करती हूँ, चाहे मैं कितना भी बिजी दिन हो मेरा. तो एक माइंडफुलनेस है मेरे अंदर जो मैंने अभी कुछ पिछले सालों में ही कल्टिवेट की है, जिसमें उस मोमेंट में सिर्फ मैं उस मोमेंट की होती हूँ. उस पल में सिर्फ उस पल का होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हम लोग के दिमाग में ब्रश करते हुए 100 चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन अगर आप ब्रश करते हुए सिर्फ ब्रश करेंगे ना, सिर्फ उस मोमेंट में उस मोमेंट के हो जाएंगे, things will change. वही तो meditation है ना. Slow down, which is what meditation is after all, And I don't meditate, but I find these meditative moments in my everyday life rituals, which give me that sense of calm and give me that sense of happiness. कभी-कभी मैं इतनी भागदौड़ में होती हूँ, यहाँ शूट है, फिर यहाँ रिकॉर्डिंग है, फिर वहाँ स्टेज पर जाना है, पूरा दिन ऐसा है. लेकिन उस दिन में भी कई बार गाड़ी में बैठकर just while looking out, मैं शीशा नीचे करूँगी. And just that moment, where the breeze comes, if even that 1 second can be a ritual, I know I'll have a good day. The power of rituals is immense, and having rituals is very important because जब आप कुछ ऐसे rituals बना लेते हो ना, तो एक तरह से आप system set कर रहे हो, है ना? And people's fail because we are governed by our emotions, our behavior, people, society, ecosystem, whatever and whatnot. But systems are not, right? So people change, systems don't. People fail, systems don't. Absolutely. So your rituals are kind of a system that you're making for yourself, that this works for me. Even on this kind of a day, this will get me finding by. Those moments. Yes, absolutely. Such a brilliant way to look at life, Priya, and I love your this wholesome perspective about life, and I love the way that you are so accepting of yourself, even in the things which are very cliche for you to be true, but they are not. जैसे कि कहते हैं कि अगर जो राइटर्स पेपर पे नहीं लिखते हैं या उस तरह से नहीं सोचते हैं, उनका प्रोसेस वो नहीं है, तो शायद ये कैसा राइटर है यार, है ना? Those things. Okay, you're saying that you don't meditate. आज के ज़माने में it's so fancy and it's so this thing prevalent to say that, oh, I meditate, I take out those 10 minutes, I do this and that. But saying all these things and yet finding your alternate ways of doing it, because that works for you. Absolutely. That makes it practical and applicable for you. Absolutely. है ना? मेथड से ज़्यादा आउटकम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल, बहुत ज़्यादा. है ना? तो वो इंटेलिजेंस होना कि यार ये मेथड दुनिया ने बताया है मुझे कि पेन से लिखो, इससे लिखो, मेडिटेशन करो, ये करो,
बट मेरे लिए नहीं कर रहा है यार बिल्कुल, वर्क, बिल्कुल। तो मुझे वो ढूंढना है जो मेरे लिए वर्क जो करे। मेरे लिए वर्क वो किसी और के लिए कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्रिटिसिज्म मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, तो वो करेज भी हो पाना टू बी योरसेल्फ, आई थिंक दैट्स इमेंस. So that is one powerful thing that I think one can learn from your journey. I have seen you always owning up to who you are. चाहे वो प्रिया काले कपड़े पहनने वाली, जोर जोर से चिल्लाने वाली, थाली बजाओ वाली कभी थी, या फिर जो आज आराम से. I've always owned who I was. There have been times in my life where I haven't liked who I was, but I've still owned it. But I was also very aware of the fact that I wasn't liking who I am. And I think liking is also a very important emotion that we don't give a lot of credit to. It is very important to like before you love. If you don't like a person, you will never be able to love a person. If you don't like yourselves, you will never be able to love others. तो ये भी एक चीज मैंने सीखी है और अपनाई. These are the mistakes that I have made. Has it happened with you that you have not liked the person, but you've tried to force love? Yeah, I mean, we've all been through such relationships, I think, जिसमें आपको उनकी शख्सियत पूरी तरह से नहीं पसंद, लेकिन कहीं ना कहीं there is that attraction, or there is that, love behind it, or there is, वो होता है, वो हम सबके साथ होता है. Again, it's important to own it and be aware of it. I think जहाँ awareness होती है ना, वहाँ सब कुछ बदल सकता है. Awareness is a very important thing in life. And हम लोग कभी कभी अवेयर होते हैं, लेकिन हम we choose to ignore the red flags, or we choose to ignore the little guts, जो हमें एक inner voice जो constantly बात करती है ना हमसे. I think वो कहीं ना कहीं में I feel it's a form of God. To me, a lot of people ask, if I'm religious by nature, and I tell them that I am, by the way, I am a religious and a spiritual person, both. At the same time, I listen to my inner voice a lot. To me, my inner voice is God guiding me a lot. और जहाँ जहाँ मैंने उस inner voice को ignore किया, चाहे वो किसी भी aspect of life में हो, वहाँ मैंने बहुत regret किया. सेम. आई थिंक वो गट उसको बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग एक इंट्यूटिव पावर आपके पास है ना, जो आपके अंदर है, यहीं पे है, सेंटर ऑफ योर बीइंग, सेंटर ऑफ आपके बीइंग में ही है वो. और अगर आप उसको इग्नोर करते हो, तो आई हैव आल्सो हैड दोस मोमेंट्स वेयर थिंग्स आर. Priya, what is one biggest learning that has come out for you out of your failed relationship? To fail with grace. I think बहुत ज़रूरी है to lose with grace, to let go with grace, and to fail with grace. I think हम लोगों को ज़िंदगी में हमेशा अचीव करना सिखाया जाता है, जीतना सिखाया जाता है, हारना सिखाया नहीं जाता, हारना सीखा जाता है. And I think वो मेरी failed relationships से मैंने सीखा है. And I have also learned to not force connections, to not force relationships, to not force chemistry, to not force love. ये चीज़ें naturally और organically ही होनी चाहिए दो लोगों के बीच. So that has been my biggest learning. Failing with grace is something that's just so powerful and beautiful if you can imbibe it. क्योंकि उस टाइम पे फ्लस्टर होना, bitterness, anger, resentment, ये सब आना बहुत natural है. लेकिन grace can let you let go, can make you let it go with a little more ease and with a little more calm. And also understanding that just because someone has not been a good lover to you doesn't mean that they are bad people. It's just that the two of you were not meant to be boyfriend-girlfriend or boyfriend-boyfriend or husband-wife or whatever way your relationship was. To not blame the person, I think is very important as well. Because कहीं ना कहीं वो fit नहीं हुआ. It's okay. That person can still be a great partner to someone else or a great husband to someone else. The same goes for us. I feel it was very important for me in life to understand that as well. That, just because I haven't been able to be a good girlfriend to one person doesn't mean that the same thing will apply to the other person. That has always been there. I've always given myself a bit of grace as well. I've also had my experiences where I have tried to force things, make them fit, make them work, only to realize later that in that process I was putting so much pressure on myself and on the other person also. कि इसको तो चलाना ही है, इसको तो करना ही है. Been there, done that. I got married at the age of 21, and it was so important to me, and I got married to someone that I loved. It was not an arranged marriage, and मेरे मन में इतना ज़रूरी था उस शादी को कायम रखना that जब
चीजें मुझे अंतर मन में पता था ठीक नहीं भी है, तो भी मैं अपने आप को कन्विंस करती थी कि ठीक है। और वो जो पाथ आप लेते हैं फिर एक बैड रिलेशनशिप में होने के बाद, वो ना आपके लिए जायज होता है ना दूसरे इंसान के लिए जायज होता है। कहीं ना कहीं आप दोनों को चोट पहुंचा रहे होते हैं, क्योंकि आप खुद को आप आई स्टार्टेड बिकमिंग द वर्स्ट वर्जन ऑफ प्रिया। और जहाँ मुझे वो रियलाइज होने लगा, वहाँ मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरे लिए भी ठीक नहीं है और ये उनके लिए भी ठीक नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स द मोमेंट, आई विश इट कम्स अर्लियर, पर हमें शादी और लव को लेके जो एक वैल्यूज होती हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं। इट्स नॉट एन एवरीडे अकरेंस टू मी टू गेट मैरिड, राइट? True. तो आई थिंक दैट्स ऑलवेज देयर। उसकी प्रोस भी है, कॉन्स भी है। इट इज गुड टू ऑलवेज गिव योर रिलेशनशिप एन ऑनेस्ट ट्राई, very good to do that. It is also good to repeatedly try, but it is also good to know when it's not worth trying. Neither for you nor the other person. Nor for the other person. Yeah. Again, it doesn't necessarily mean that anybody is a bad person out of the two of you. It could just mean that you're not fitting in together. Yes, absolutely. एक बहुत commonly लोग believe करते हैं और पूछते भी हैं कि अरे तुम्हारी तो love marriage थी, फिर क्या हो गया? तुमने तो खुद पसंद किया था, फिर क्या हो गया? I mean, you all go through your journey of growth in a relationship, evolution, as individuals, right? And so much is changing every single moment. So your choice that you have made in a moment could also land you in a place where you're like, yeah, it's not working out. Absolutely. और क्योंकि हमें सब लोग इतना कहते हैं ना, तुम्हारी तो लव मैरिज है, तुमने तो खुद चुना है, कहीं ना कहीं हमें फील होने लगता है यार मैंने ही तो चुना है, तो मुझे तो चलाना ही है, मुझे तो वर्कआउट करना ही है, मैं कैसे हाउ कैन आई टेक अ स्टेप बैक? और अब इतना डिससर्विस कर रहे होते हो दो लोगों को, एंड यू नो दो लोगों को, एंड बहुत सारे लोग कहते हैं अरे अगर आपको शादी बचानी है बच्चा कर लो। वर्स्ट एडवाइस होती है, बिकॉज जब दो नाखुश लोग एक और इंसान को जिंदगी में लेकर आ रहे हैं तो वो बच्चा खुश कैसे रहेगा, राइट? अगर आप दोनों ही खुश नहीं हो तो आप उस बच्चे को खुशी कैसे दे सकते हैं? एंड ये तो यू नो व्हेन यू आस्क अबाउट लाइफ लेसन्स, इज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ लेसन्स आई हैव लर्नड इज दैट आई नीड टू बी हैप्पी and the other person needs to be happy in order for us to create a happy individual. Otherwise I'm creating a traumatic person for life. हर बच्चे के जो पहले के 7 साल होते हैं उसमें 90% of your subconscious gets built in the first 7 years of your life. And all that you operate in your life after comes is out because of those that 7 years, right? So I have to be the best version of Priya, the happy Priya, content Priya, in order to make a human being or for the rest of their life अगर मैं उनको impact करने वाली हूँ तो. So Priya, when I went through my divorce and a lot of my friends who are still struggling into their marriages, they tell me that you got it easy because you didn't have a kid. है ना, बहुत easy लोग बोलते हैं कि यार हमारे पास तो बच्चा है, हम ये step नहीं ले सकते. But मैं उनको भी यही कहती हूँ कि यार I don't encourage and promote divorce at all. If you can make a marriage work, there is nothing like it. I love companionship. I regard love relationship at the highest pedestal, right? But if it is not working and if you are just forcing it and you are sometimes putting it on your kids, sometimes you're putting it on your financial status, sometimes you're putting it on your not being independent, whatever else the reason could be. The point is, if you're not a happy individual, you are not making a happy home. Absolutely. You're not making a happy environment, whether it's for the kids or it's your parents or even your partner or your spouse. Yes. जिनकी भी वजह से आप कह रहे हो ना आप इसको होल्ड करके रख रहे हो, it's actually dysfunctional. और ये जब मेरे इस तरह की बातें होती है और डिबेट्स होते हैं तो हमेशा होता है नहीं तेरे लिए आसान है ये कहना. और मैं you know, I'm cognizant of the fact that it is easier when you don't have a kid. I agree. But that is no reason to stick around if you have one. Yes. I would rather be a happy mom than be a perfect mom. You know, I would rather be a happy woman than be a perfect woman. So I think बहुत ज़रूरी है ये चीज़, और ये बात मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कही है, और I hold marriage in great regard. Otherwise, I would not have remarried in life. But at the same time, I feel that it is very important for two individuals to be happy with each other, to create a happy child, to create a happy family, and for each other. Why would I be married to someone if I can't keep them happy, or if I can't love them the way I'm supposed to love them? तो मैं उनके लिए भी तो एक डिससर्विस कर रही हूँ ना, अगर मैं सचमुच में उनकी केयर करती हूँ. कभी कभी शादियों में प्यार चला जाता है लेकिन परवाह रहती है. That care is always there, you know. तो अगर आप सचमुच में किसी इंसान की परवाह करते हैं ना,
तो आप उन्हें अपना बेस्ट वर्जन ही देना चाहेंगे. आप उन्हें अपना हाफ हार्टेड वर्जन, डाइल्यूटेड वर्जन, 50% वर्जन नहीं देना चाहेंगे. तो आई थिंक वो याद रखना It is बहुत very जरूरी important to understand the difference between love and care. है. Sometimes we confuse care with love. I Sometimes do. I often say प्यार परवाह है because I think शुरू वहीं से होता है, शुरू परवाह से ही होता है. लेकिन जब अपने अंतिम चरण पे पहुंचता है तब कहीं ना कहीं उसमें एक डिसोसिएशन आता है. Then you can maybe care about someone from afar but maybe not necessarily love them. Yeah, that distinction is an important one. Yeah. और बहुत सारे लोग हैं ना यही कहते हैं कि अरे you care मतलब you love. But that is not true. And there's a difference, and to each his own journey to explore that difference. But I really hope that we sort of reflect back in our lives, take this journey within to really understand कि जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी मेरे साथ हो रहा है, इसमें कितना मैं खुद को होने दे रही हूँ, इंस्टेड ऑफ बाकी लोगों का सुन के और जिस तरह से सिस्टम्स चलते हैं उस तरह को बिलीव करके. Priya, it's been such a pleasure talking to you. जाते जाते just one last question जो मैं अपने सभी गेस्ट से पूछती हूँ, because this is my personal quest of finding the perfect definition of success. I know perfection is something that we shouldn't chase, but क्या है जो success है actually, क्योंकि इतने तरीके हैं इसको मापने के और इतने तरीके हैं इसको समझने के. So सही तरीका क्या है या आपका तरीका क्या है? मेरे लिए success is contentment. सक्सेस इज सेटिस्फैक्शन, सक्सेस इज सुकून. चाहे वो आपको एक छोटी नौकरी करने में हो, बड़ी नौकरी करने में हो, अपना बिजनेस करने में हो, घर पर बैठने में हो, जब तक आप कंटेंटेड हैं लाइफ से आप सक्सेसफुल हैं. आई थिंक अपना ये मापदंड मैंने हमेशा से बनाया हुआ है और मैं बहुत समय तक कंटेंट नहीं थी लाइफ से, राइट. तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल नहीं समझती थी. आज अगर आप मुझसे पूछेंगे एम आई कंटेंट विद लाइफ? यस आई एम. And to me, that is being successful. But does that mean am I not hungry for more, or do I don't have more desires and more dreams to achieve? I still do. But at the same time, I'm content with what I have achieved so far. That discontentment is not there, but the desire to do more is always there. And I think वो भी अपने आप में success का एक मेरे लिए मापदंड है कि आप खुश हैं जो इतना किया है और भी करना चाहते हैं. Yeah, when ambition and contentment can go together, I think that's the best way for it. क्योंकि ambitions और desires और ये सब चीजें recluse बनने की कोई जरूरत नहीं है. You can still be very outwardly. You could still want the best car and all of that is okay. But to be content where you are, I think is a very important life lesson. और काश ने कहा है ना, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना. तो वो नहीं होना चाहिए, लेकिन desperation भी अब नहीं है. Thank you so much, Priya, for coming on the Journey Within podcast, for helping us understand so much about our inner world. इतनी सारी खूबसूरत बातें आपने की और इतनी सारी पर्सनल बातें आपने की. I really am grateful to you for opening up and for sharing from a very authentic place in your heart. Thank you so much, Priya. It's been a pleasure. Thank you for having me. Hi, मैं हूँ Priya Malik and you're watching me on the Journey Within podcast. Make sure you like, share and subscribe. Hey guys. Thank you for watching this episode of the Journey Within podcast with Priya Malik. I really hope आपको एपिसोड पसंद आया और अगर ऐसा है तो प्लीज डू लेट अस नो द सेम एंड योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. आपके कमेंट्स, लाइक्स, शेयर्स और सब्सक्राइब से यूट्यूब एल्गोरिथम ये डिसाइड करता है कि ये पॉडकास्ट या जो भी ये वीडियो है ये कितना अच्छा है. सो इफ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो, please do engage on the content and share it on your social media channels. If you'd like to watch the behind the scenes fun and the sneak peek of the podcast, please follow us on Instagram at TJW_podcast. Also, we have updated the time of upload of this podcast. अब हम हर Saturday 1 बजे ये podcast live करते हैं अपने YouTube channel पर. So do subscribe to the channel, like, share, comment, and we'll see you in the next episodes. Thank you.